व्हाट्सअप यू गाइस। सो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ये फेस्टिव लुक। ये बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकल है और यू कैन अचीव दिस इन 15-20 minutes depending upon your skills, but this is very easy and long wearing। मैंने लॉन्जिविटी का भी इसमें बहुत ध्यान रखा है। एक्चुअली मैं ना सो गई थी तो थोड़ा सा स्मज हो गया है काजल, सो डोंट माइंड दैट, बट इट इज रियली लॉन्ग वेयरिंग मेकअप। सो स्टार्ट करते हैं। स्किन प्रेप भी जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। सो आई एम यूजिंग अ ग्लो टोनर बाय गुड वाइब्स, या गुड वाइब्स, एंड यू कैन सी अभी ना स्किन केयर इतना अच्छा होगा कि ग्लो, यू कैन सी कितना अच्छा ग्लोई प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं। देन यूजिंग अ मॉइस्चराइजर, ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर मैं तभी यूज करती हूँ जब मेकअप करती हूँ, अदरवाइज मैं इसे यूज नहीं करती हूँ बिकॉज फ्रेग्रेंस है ना। बट यू कैन सी इट्स वेरी डूइंग। नाउ यूजिंग माय सनस्क्रीन, और मैं तो दिन में शूट कर रही थी ना, बट इफ यू आर गोइंग आउट इन नाइट यू कैन ऑब्वियसली स्किप दिस, एंड या दिस इज माई फेवरेट। और इससे स्किन बहुत ड्यूई हो जाती है, और प्लम पे तो अभी 50% ऑफ भी चल रहा है। एंड मैंने प्लम बहुत शॉपिंग की फ्रॉम Amazon क्योंकि बहुत अच्छी सेल चल रही है। एंड आई एम अ प्राइम मेंबर, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। या आई लव दिस। एंड नेक्स्ट इज दिस ये भी शुगर का नया प्रोडक्ट लॉन्च है। काफी सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च मैं इस वीडियो में टेस्ट आउट भी कर रही हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी गुड यू गाइस, एंड क्रीम बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आई रियली लव इट। सो या मैं टेस्ट आउट कर रही थी ये जो स्ट्रोपी में, काफी कंपेरेबल है मैक के। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने ऐसे काफी अप्लाई किया, बट यू कैन सी कोई चंकी शिमर्स नहीं है, और स्किन कितनी अच्छी प्रेप हुई, इट्स वेरी डूई। और मुझे ऐसा स्किन प्रेप बहुत पसंद है, स्पेशली फॉर ओकेजन्स। आई जस्ट लव हाउ माई स्किन टर्न आउट। यू कैन सी कितना डूई हो गई है। नाउ मेरी आईब्रोज बहुत बुशी हैं तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ एक आईब्रो जेल यूज करती हूँ। बट फेस्टिविटीज के लिए यू कैन यूज अ पाउडर ऑल्सो, बट मेरी काफी बुशी ब्लैक आईब्रोज तो अजीब लगती हैं मुझे वंस आई use powders. Now using my favorite concealer, you guys, I just love this concealer, and ये है Hydra Camo, not Camo, it's Hydra Camo। और इस वीडियो को शूट करने के बाद आई मिसप्लेस्ड इट। सच में मुझे ये नहीं मिल रहा। आई वाज सो अपसेट, एंड या लाइक मुझे कहीं नहीं मिला। मेरा मेकअप इतना ऑर्गेनाइज है फिर भी नहीं मिल रहा, बट आई जस्ट लव इट, इट्स सो गुड। इसे प्रोजेक्ट पैन में रखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको इतना ज्यादा यूज किया है ना, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड। ये बहुत हाइड्रेटिंग है, और हाइड्रेटिंग कंसीलर मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कंसीलर मेरे फट जाते हैं अक्सर करके अंडर आईज से। So yeah, I'm just using this highlighting one also। और यहाँ मैं इसको, ये टेक्निक देखी होगी मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं टू अपलिफ्ट द फेस, और इससे बहुत डिफरेंस हो गया था इंस्टेंटली। यू कैन सी कितना डिफरेंस हो जाता है। एंड नाउ यूजिंग अ स्किन टिंट यू गाइस, मैंने यूज की है मेबलिन की स्किन टिंट, एंड आई जस्ट लव दिस। और इसको मैंने कम ही यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, बट यू कैन सी क्योंकि मुझे ना लाइट कवरेज रखना था तो मैंने कम यूज किया। नाउ यूजिंग अ सेटिंग स्प्रे, एंड ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। एंड यूजिंग क्रेज, और मेरा ये खत्म होने वाला है। आई वाज थिंकिंग ऑफ री परचेजिंग इट, बट मैंने सोचा लेने देते हैं। नाउ यूजिंग कफ्स एंड लैशेस का लिक्विड ब्लश, एंड दिस इज वेरी गुड, आई लाइक इट। Now using my favorite current obsession, दिस इज बाय प्रो, और ये प्रो वाली रेंज का ना हाइलाइटर है। इट्स वेरी वेरी गुड, बट दिस इज ओनली सुटेबल फॉर फेस्टिविटीज या मैरिज रिसेप्शन। इस तरह के लुक करने हो तभी मैं इसको पुल अप करती हूँ, बिकॉज दिस इज इंटेंस, लाइक इंटेंस। और यू कैन सी इतना सा कप से चले जा रहा है, चले जा रहा है, यू कैन सी इट्स वेरी 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 डूई। बट ये बहुत अच्छा लगता है, आई जस्ट लव इट, लाइक लुक एट द ग्लो। So yeah, I'm obsessed with this one. My favorite. Now using my favorite bronzer. This is the Revolution का bronzer। यार ये नया प्रोडक्ट है बट अभी मैं दिखाऊंगी। इसमें भी लग रहा है आई एम लाइक कैन हिट पैन यार। इट्स लाइक अभी से डिप दिख रहा है, मैंने इसे कितना कम यूज किया है, अभी तो नया प्रोडक्ट है। और ब्रॉन्जर का नया वीडियो आ रहा है यू गाइस, आई विल
डेफिनेटली। नाउ यू कैन सी मेरी स्किन कितनी अच्छी नेचुरल लग रही है, बिल्कुल भी मेकअप ही नहीं लग रही। मैंने बेस काफी सही बेस रखा है। एंड नाउ यूजिंग द स्विस ब्यूटी का नया लॉन्च, तो इस वीडियो में काफी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च ट्राई किए हैं। तो ये नया पैलेट कब लॉन्च हुआ मुझे नहीं पता पड़ा, बट दिस इज सो गुड। इसका इन डेप्थ रिव्यू अभी आएगा, अभी मैं नहीं कर रही हूँ रिव्यू, बट बहुत सही है। यू कैन गो एंड ग्रैब इट। सेल पे और भी डिस्काउंट में मिल जाएगा। अभी बहुत अच्छी सेल चल रही है, तो मैं थोड़ी रिकमेंडेशन भी कर देती हूँ। बाकी बहुत दिनों से पेंडिंग है यू गाइस मेरी रिकमेंडेशन, में बीमार पड़ गई थी। यूजिंग फिटमी का कॉम्पैक्ट, एंड ये सेल में बहुत सस्ता मिल रहा है। ओके, नाउ यूजिंग स्विस ब्यूटी का ब्लश। मैंने ये वाला ब्लश कब से अपने चैनल पे शो नहीं किया यार। अब मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज हो गया ना, मैं वो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, करूंगी जो बहुत दिनों से नहीं किए, जो मेरे फेवरेट थे। दिस इज सो कंपेरेबल टू के वाला ब्लश, बहुत कंपेरेबल है शेड वाइज, फॉर्मूला वाइज। सो if you want to save some bucks, this is very good। और स्पेल पे तो obviously और डिस्काउंट है। ओके, नाउ यूजिंग नया वाला इनसाइड प्रो पैलेट, ये नया लॉन्च है इनसाइड प्रो का। सो आई यूजिंग द मिडल वाला पीच शेड, नाउ यूजिंग अ ब्राउनी ऑरेंजी शेड। एंड या ये बहुत डिसेंट है, ये पैलेट मुझे बहुत सही लगा फॉर एन एवरीडे बेसिस। एंड या एंड दिस इज द गोल्डन जो मैंने ऑल ओवर द लिड्स यूज किया है। डिसेंट पिगमेंटेशन है you guys, मैंने काफी बार इसको बिल्ड किया टू बी ऑनेस्ट टू गेट दिस लुक, बट काफी इंटेंस हो गया था उसे, काफी बिल्ड करना पड़ा, ये तो मैं मानती हूँ। थोड़ा सा फिर मैंने वही ऑरेंजी ब्राउन लिया, फिर ये ना अच्छे से पैक किया। तो मैंने काफी दिनों बाद सोफी आइज की है, वी कैन से तो ये काजल मैंने बहुत सालों बाद एक ब्लैक काजल लगाया होगा, आई वाज सो एक्साइटेड। काजल लिया और इसको स्मच कर दिया है विद अ पेंसिल ब्रश। ये बेली का ब्रश है, बहुत सॉफ्ट है। एंड या एक ब्रश वीडियो आ रहा है यू गाइस, इन डेप्थ रिव्यू करूंगी जो नए ब्रशेस मैंने परचेज किए हैं। आई हैव यूज्ड एलिटीन का काजल क्योंकि ये स्मच हो जाता है। नाउ यूजिंग इनसाइड की ये लिप लाइनर, ये बहुत ही क्रीमी है, ऑलमोस्ट लाइक अ लिपस्टिक ही है। एंड मेरे ड्राई लिप्स हैं तो परफेक्ट है। यूजिंग मॉफ टॉप बाय स्विस ब्यूटी, मुझे ये बहुत पसंद है और इस लुक के साथ मुझे लगा मॉफ टॉप बहुत परफेक्ट रहेगा। सो या यू गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस लुक, एंड आई बी बैक विद एसेसरीज एंड ऑल। यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कितने सालों बाद काजल लगाया मुझे भी याद नहीं। सो आई वाज लाइक, मुझे थोड़ा सा कॉलेज की याद आ रही है इस वक्त। एंड आफ्टर टेकिंग द शावर स्टार्टेड फिल्मिंग, तो अभी भी मेरे बाल थोड़े गीले हैं, सो we'll leave that। And yeah, this is how the look turned out। You can see this is kind of that Navratri kind of look. One thing is still missing, and that is a Winnie. So my Windies are so small and tiny, उन्हें मुझे लगाना ही नहीं आया कभी। I hope it's perfect। Okay, so okay, and so for me, I think this is better. Okay, you guys. So I don't know. Wait, place Windy. Okay, you guys. So yeah, this is the final look. I am so shook by myself. Like I never do traditional looks, so I hope I am like not failing। And मैंने ना काजल लगाया है after how many years? Like I used to wear so much kajal in college, like this smoky eye kajal on me, not so thoda sa kajal, like a lot of kajal with a nude lips and a lot of compact। That was my everyday makeup। So थोड़ा थोड़ा मुझे उसकी याद आ गई। I used to smoke out kajal like this because उससे वो long wearing हो जाता है, and we want that longevity in office ना, सॉरी कॉलेज ऑफिस ही निकलता है मेरे मुंह से। सो my filming drawer were coming in frame। Okay, so talking about this look, I have done some simple looks, तो बहुत सारे simple looks भी चैनल पे आने वाले हैं। This I thought would be definitely beneficial for garba nights and all, and let's do a
outfit check also, because this, okay, so this is like a very adorable, like that Indo-Western gown situation. And मुझे ऐसा कुछ दिखा तो मैं लिंक कर दूंगी, but this is from भोपाल न्यू मार्केट. So that's it. So या टॉकिंग अबाउट दिस लुक ना, मैंने बहुत सिंपल लुक्स भी किए हैं, वो चैनल पे पहले आएंगे, फिर ये आएगा. आई होप क्योंकि गरबा आने वाला है, तो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस. आई थॉट दिस इज वेरी गरबा अप्रोप्रिएट. सो या दैट्स दैट. एंड बाकी पूरा वीडियो ना वॉइस ओवर होने वाला है. एंड yeah, that's pretty much it for this video, you guys. I hope you enjoy this look. I mean, this is so good, you guys. And मैंने थोड़ा सा स्किन केयर भी शेयर किया है, बेसिक स्किन केयर विच यू कैन डू बिफोर मेकअप, सो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल. But you can see overall I have used a skin tint and a lot of cheap product, powder and cream and powder cheap product, क्योंकि long lasting makeup चाहिए हमें. And I have used a fixer, and again I think I will use a fixer to lock everything up, and this does make a difference, you guys. तो ये मेकअप ना पूरा दिन टिका भी रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, because we have used fixer also 2 times, है ना. तो एक बेस करते वक्त और एक अभी. एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, क्योंकि हमने फाउंडेशन नहीं यूज की है, फाउंडेशन थोड़ा सेपरेट होने का चक्कर रहता है, स्किन टिन यूज की है. देन वी हैव यूज फर्स्ट क्रीम चीक प्रोडक्ट, देन पाउडर चीक प्रोडक्ट, जिससे वो पूरा सेट हो जाए और मूव नहीं करे. तो ऑल इन ऑल ये मेकअप ना बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, सो उसकी टेंशन मत लेना. एंड आई नो longevity is a must when we are doing garba nights and all. So that's that. And also, you guys, how adorable is this? This was a gift by my bhabhi, और मैंने ये फर्स्ट टाइम कैरी किया है. So yeah. So that's pretty much it for this video, you guys. I hope you like this video, and I thought of doing, a proper garba night, you know look with outfit and all. So I hope you enjoy this. I hope you like the video. I hope you will consider subscribing. ऐसे ही awesome contents लाती रहूंगी. और भी मुझे बता देना कौन सी look चाहिए. ये look, upcoming festivities के लिए बिल्कुल perfect है. Just, you can carry it with a sari on Diwali also. So yeah, I hope you like it. I hope you enjoy it. If you do, please do not forget to like, share, subscribe, and comment down below और कौन से लोग मुझे करने चाहिए इस चैनल पे. And I shall see you in my next one. Bye.